is nothing added and nothing removed in that working, है ना. तो उसको अपन क्विकली रिवाइज करेंगे व्हाट वी हैव स्टडीड एट दैट टाइम, है ना. क्लास 8th में एक चैप्टर था, यस आई रिमेम्बर, लाइट चैप्टर वाज देयर इन दैट आल्सो, है ना. एंड या, so let's do it quickly. So I'll post it in, I'll upload it in YouTube and I will share the link everywhere. Okay. So we are going to start human eye and colorful world. Okay. So human eye. Let's discuss first human eye. So in human eye, I will draw the diagram. Okay. This, but this will not be done. Why it is not happening? Okay, so this part. This part, when we see our eye, so let me just post it one diagram better. Human eye. So yeah, I will explain better by this. Visible? ये है ना. तो इससे I will draw the diagram also. Don't think that sir will not draw diagram. I will also draw the diagram because you have to draw the diagram. तो देखो, अब इसमें मैं केवल इसका ये इतना अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी लैपटॉप में कि मैं बना सकूं. So when we see our eye, so this white portion we see here, okay, and then we see the colored portion. So this white portion is this, ये पूरा coated रहता है बाहर की तरफ. अगर यहाँ पर दिख रहा होगा, white portion दिख रहा है पूरे में, है ना. This white portion. So this white portion is known as sclera. जहाँ light enter नहीं करती, that is called sclera. And this colored portion we call, colored portion is called iris. और आइरिस के ऊपर जो कोटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दैट कोटिंग ओवर आइरिस? ट्रांसपेरेंट कोटिंग, कॉर्निया. कॉर्निया, है ना. सो कॉर्निया, यू सी दैट इट इज लिटिल बिट इन अ कॉन्वेक्स शेप. Yes, yes sir. So sclera is there. So cornea is in convex shape. It collects the light. What is it? First, it is a transparent coating over iris, है ना. Transparent coating over iris. And what is the work? It collects the light from outside. Okay, it collects the light from the outside, and it is in convex shape, so it can collect. Why it is in convex shapes? Convex shape collects the maximum light. Because suppose if it is not in convex shape, okay, suppose if it is not in convex shape, suppose if it is like this only, so the light which is coming from here and here, it will pass, it will not enter in the eye. Yes, yes or no? So yes, when there is this here, it is little bump is there, if you will see. So this little bump, it collects a little bit extra light here. Got it? That little bump collects a little extra light here. Okay, so that is your convex. That's why it has the convex. Now it is a transparent, so it is transparent, so it allows all the light to enter.
it passes all the light. Passes all the light. Okay. Then here this portion you see, and this is called iris. What is iris? You can see here, this is iris. Visible? I should use a little bit darker. This is iris here. Is it visible? Yes or no? Yes. Little Yes, bit it is. pink color is there. Yeah. So ये होता colored portion. So iris, what is iris? Iris is colored portion of eye. So every person has a different color of the eye, little bit shaded, little bit dark brown, green, blue, brown, black, like that. Okay. Aishwarya Rai has a blue eyes. You see, might have seen, you know, like that. So what is the work of iris? Anyone? Anyone? What is work of iris? Nobody knows? Wow. See, in iris, this is a colored portion. Iris में एक छोटा सा होल दिख रहा है? Yes or no? Yes. तो ये होल को क्या बोलते हैं अपन? What do you call this hole? We call this hole Pupil. pupil. Is it mentioned here? Not mentioned. What is the work of pupil? Pupil is hole in eye. Hole in iris, you can say. And hole in iris. So when light has to enter, so it goes through this hole, right? It goes through this hole inside the eye. So pupil is a gate, you can say. Pupil is a gate, or it is a opening, or it allows the light to enter inside the eye. Allows the light to enter inside the eye. लाइट कहां से अंदर जाती है? इस होल से, और इस होल को अपन क्या बोलते हैं? प्यूपिल. ओके. अब ये बताओ, आइरिस का क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ आइरिस? हाँ? Nobody knows. What will be the work of iris? It helps in the protection. Sir, to control the amount of light coming. Yeah. देखो, कभी भी देखना, मैं एक छोटा सा एक वीडियो था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई का, इससे तुमको दिखेगा. मैंने शायद पिछले साल किसी को दिखाया था आइरिस कॉन्ट्रैक्शन. आइरिस की स्पेलिंग में एच नहीं आता ना? No, sir. So where is that video? Yeah, this is. I was going to show this. Now, see this. You can see here this here. See the size of hole. You see, too much large is there. Yes. Yes, too much large. Okay. Now, as you project a light on the eye, see what will happen. Now see the size of iris. Sorry, size of this hole.
You can compare here size of hole on the right side and size of hole on the left side. You can compare. Yes, Yes, sir. sir. है ना? So what happened as you opened the eye, the light started going inside the eye, and when the light started going inside the eye, the size of pupil decreased. So who is controlling it? Iris is controlling. Iris controls the amount of light entering in the eye by adjusting size of pupil accordingly. Means if you will go in dark room, size of pupil will expand. But if you will go suddenly go look towards the sun, or suddenly if you will look towards the bright light, its size will decrease. Because what is the reason? Because after pupil, what is there? This lens. And what is which lens it is? Convex lens, concave lens. Convex. Convex Convex lens. lens. And convex lens converges the light rays. Yes. Yes. Okay. So it will converge the light rays on retina. Okay, now you see it. What you see when you converge the light from sun ray on a piece of paper, what happens? It It start burns. to burns. It starts burning, है ना? So आइरिस में अगर तुम लाइट को फोकस कराओगे, सॉरी आइरिस कह रहा हूँ, रेटिना में अगर सनलाइट को फोकस कराओगे तो क्या होगा? रेटिना जलेगी, Yes, sir. है ना? इसी कारण से आइरिस क्या कर देती है, उसके जो जितनी अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए उतनी ही भेजती है ना? वो साइज को कम है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी डार्क रूम से एकदम ब्राइट रूम में जाते हो, आंखों में चकचौंधी सी छा जाती है, एकदम से देख नहीं पाते अपन कुछ चीजों को, है ना? या ब्राइट रूम से एकदम डार्क रूम में जाते हो तो चीजों को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि आइरिस को आइरिस को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यस और नो? It will take time. So at that time we feel uneasy to see something when we suddenly go from dark room to bright room, or when you go from bright room to very dark room, there is a fraction of second time for which you feel uneasy when you look towards something. Yes, because at that time iris keeps on working. iris क्या करता है? काम करती है ना? तुम लोग अच्छा सो रहे हो, अच्छी गहरी नींद आ रही है, लाइट बंद है ना, और कोई आके एकदम से सारी लाइट चालू कर दे और तुमको उठाए, आंखों में एकदम से जब रोशनी पड़ती है थोड़ा सा अनईजी फील होता है ना? Yes, sir. तो वो अनईजी इसी के कारण फील होता है, ठीक है? क्योंकि एकदम से जब आंख खुलती है तो साइज ऑफ प्यूपिल इज वेरी मच लार्ज and too much light is going inside and focusing on retina, which is hurting the retina. That's why you feel uneasy. Then iris, what instantly it does? Iris just decreases the size of pupil. Now got it? What is the work of iris and what is work of pupil? What is work of Yes, cornea? sir. Okay. Yes. Then this is lens. What is lens? What is the work of lens? To converge the light. Lens, yes. To converge light on retina. ये किसमें लाइट को कन्वर्ट करता है? रेटिना को, है ना? अब क्या है कि ये लेंस का काम ये है, ठीक है? इसको छोड़ दो अभी। अब ये लेंस देखो, अगर थोड़ा बारीकी से देखोगे तो यहाँ पर ये हल्के से थ्रेड्स दिख रहा है। Yes, sir. Okay, these threads are there, and these threads we call it suspensory ligaments. These are holding the lens. Okay, these are holding the lens, and this muscle here, if you will see, this is called ciliary muscle. Okay, this is called ciliary muscle. So suspensory ligament is holding the lens. And what is the work of ciliary muscle? Let me tell you. Work of ciliary muscle is to adjust the thickness or adjust the focal length of lens. Now you will ask why it is needed, why we need to adjust the focal length of lens. Tell me.
Why we need to adjust the focal Otherwise, the length? image may form anywhere. Yeah. Sir, depending on the distance of an object. चलो देखो, तुमने अभी अपन ने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा। कॉन्वेक्स Yes. लेंस में अपन ने क्या देखा कि अगर इसकी फोकल लेंथ फिक्स है और अपन ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखते हैं तो इसकी इमेज अलग अलग जगह बनती है। Yes, sir. यस और नो? Yes. अब देखो, अपने को कोई चीज देखना है तो अपने को इमेज किस पे चाहिए? Retina. रेटिना पे ऑलवेज, है ना। लेकिन अपन ये नहीं कर सकते ना कि हर बार अपन ऑब्जेक्ट को सेम प्लेस पर रखें, ऑब्जेक्ट अलग अलग प्लेस पे होगा, लेकिन अपने को इमेज उसकी कहाँ पर चाहिए? On retina. ऑन रेटिना। तो ये क्या करता है, रेटिना पे इमेज, हर चीज की रेटिना पे इमेज बनाने के लिए क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। जब तुम दूर की चीजों को देख रहे होते हो तो इसकी फोकल लेंथ कम हो, ज्यादा होती है, जब तुम पास की चीजों को देख रहे होते हो तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो फोकल लेंथ कम और ज्यादा होती रहती है डिपेंडिंग ऑन you are looking at which things, either you are looking at the far objects or either you are looking at the nearby objects. Is that clear? Yes, sir. Okay, so this we call it power of accommodation. What is power of accommodation? लाइट, जो आई लेंस है वो क्या कर रहा है, अपनी पावर को, क्योंकि अपन ने लेंस की पावर पढ़ ली है अपन ने, लेंस की पावर क्या होती है, 1/f। Yes. Yes, sir. Yes, So if f is accommodating itself means power is accommodating, yes, sir. Yes, sir. है ना। तो पावर ऑफ accommodation क्या है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ accommodation। क्योंकि अपन देखो कौन सी चीजों को देख पाते हैं, सबसे दूर की चीज कौन सी देख पाए हो अभी तक तुम? व्हाट इज हाँ, क्या देख पाए हो सबसे दूर की चीज अभी तक, नेकेड आई से, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी अदर थिंग? Sun or moon. सन और मून। स्टार्स को नहीं देखा क्या? Sir, stars also. स्टार्स आर मच मोर फार अहेड देन द सन ना, यस और नो? Stars Yes. are very much far away. So you are able to see the stars means you are able to see the distance, infinite distance तक देख सकते हैं अपन, क्योंकि अपन स्टार्स की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं क्या देखते ही साथ ही? नहीं ना। So we can see through our naked eye still the infinite distance that we cannot measure, ये नहीं कि टेप लेके मेजर चल रही, नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हो। और नियर बाय कितनी तक देख सकते हो, सबसे पास कितनी दूर तक देख सकते हो? हाँ, 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर। कहोगे सर 25 से कम में भी देख लेते हैं, लेकिन 25 से कम में ज्यादा दूर तक देखोगे तो आंखों में दर्द होने लग जाएगा। यस, Yes, होता है कि sir. नहीं? तो अगर, लेकिन अगर 25 से ज्यादा दूर तक है तो तुम चीजों को आसानी से देख सकते हो, है ना। सो 25 सेंटीमीटर से और पास में लाओगे तो आई को ज्यादा दिक्कत होती है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको देखने के लिए, है ना। सो वी कैन सी बिटवीन इनफाइनाइट टू 25 सेंटीमीटर। इनफाइनाइट से कहां तक देख सकते हैं अपन? 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। तो इतने के बीच में कितनी डिस्टेंस हो सकती है? बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती है, यस और नो? Yes. भाई Yes, sir. 26 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, कितनी सारी हो सकती है हर बार। लेकिन इमेज कहाँ बनना है? On retina. ऑन रेटिना। तो हर बार इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी, Yes. और वो चेंज कौन करता है? सीलियरी मसल। सीलियरी मसल क्या करता है? इसको कहीं खींच देगी, खींच देगी तो ये लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। अगर इसको दबा देगी तो क्या होगा? Focal length will decrease. फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, पावर कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? Yes, sir. तो पावर ऑफ एकोमोडेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? सीलियरी मसल पे। आई लेंस की फोकल लेंथ कौन चेंज कर रहा है? सीलियरी मसल कर रहा है, ठीक है। और इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं अपन? Power of accommodation. पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। तो इसमें देखो दो पॉइंट्स अपन ने और डिस्कस किए हैं। वन इज दिस इनफाइनाइट, what is the farthest distance which you can see, that you said infinite, so that is called far point of human eye,
What we call it? Far point of human eye. And what is this? 25 centimeter. That is the near point of human eye. Okay, average, on an average. For person to person, it might differ from little bit. Okay, it's not like for everyone it is 25 centimeter only. No. Okay, it is not very much like that. It can be little bit up and down. Arini is not attending classes. Why? Then we have here, so we have discussed cornea, we have discussed iris, we have discussed lens, we have discussed ciliary muscle. Sclera also I have told you, this is not needed. This is also not needed. Now, retina. What is the work of retina? On retina, retina works as a screen, right? Yes, sir. Yes, sir. It is working as a screen. But what will be the other work of retina? So it has many sensory cells, so it Yeah, if you generate It remember, passes the sensation to the brain. yeah, this converts, see, the image will form here, na? Image will form here. And image is sent to brain by the optic nerve. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Image is, but it is sent in form of electrical signal. Like wires are there. Like when we have, suppose you are using laptop or PC, whatever you are using, mouse is there, है? So if you click something on mouse, the wire is connected or wireless connection is there. So signal goes through the wire to the CPU, then it goes to the monitor. Yes, like that it happens. Yes, So sir. when an image is formed, this image supposed to be converted into electrical signal, then it is sent to brain by the optical nerve. So who will convert this image into electrical signal? That is done by what? Retina. Retina. So Retina. retina converts image into electrical signal. Signals. Okay. Okay. Retina, what is the work of retina? Retina will convert image into the electrical signal. And retina has two cells, rods and cones. So rods, rod shape, cones, cone shape. है ना? So which of them are sensitive towards the colors? Anyone remember? No? Red, I think rods are sensitive towards the dark light and cones are sensitive towards the bright light, something like that is there. Right? Yes, sir. है ना? Uh, when you see night time, dark lights are there, means no light is there. So in low light, rods work. And when there is a bright light, I'll write it here. When there is low light, so rods work. And when there is a bright light, so cones work. Is that clear? Yes. Yes, sir. So when you can see the colors in bright light or in low light? In bright light. Bright Bright light. light. So the cones are supposed to understand by this. These are the sensitive for colors. And this is sensitive for low light. So these cells in retina, they are inside retina. They are on retina. Okay, so what is their work? They will convert image to electrical signal. Okay, they will convert image to electrical signal. So in daytime, cones will do the work, or in night time, rods will do the work. Is that clear? Yes, sir. Okay, so that is all. And then when it will be converted, the signal, electrical signal will go to the brain. How it will go to the brain?
By optic optic nerve. nerve. By optic nerve. So optic nerve takes the image to the brain. अब एक चीज यहाँ पर देखो, ये convex है, convex lens है. This convex lens is gonna form image here on the screen. So which kind of image will form? Real or virtual? It's real. Real and inverted. Real and inverted. But when you see everything, are you seeing inverted or are you seeing erect? Erect. Erect we are seeing. Okay, we are seeing the erect image. So when we are seeing the erect image, means brain is doing something. Yes, sir. है ना? So see, here only inverted image will form. But when the signal will go to the brain, brain interpret it as a erected image. Is that clear? Yes, sir. Brain interpret Yes. that as a erected image. Now one more thing here. यहाँ पर देखो, if you can see that in the diagram, I have made it a mess. So no problem. I can paste it again here. Here, you can see this. This is yellow portion is retina, right? Is Yes. any cell are there at this place of retina? Any cell are there at this place of retina? It is optic nerve, na? Nerve cells will be there, means neurons will be there at this Yes. place, Yes. or rods and cones will be there. The neurons. Neurons. So if the image will form here, will it be converted into electrical signal? Yes, sir. हाँ भाई, यहाँ पर रोड्स एंड कोन्स नहीं है, तो अगर मान लो यहाँ किसी चीज की इमेज बनती है, तो क्या वो Blind इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी? Yes, sir. कन्वर्ट हो जाएगी बगैर रोड्स एंड कोन्स के. No, sir. भाई कन्वर्ट कौन करता है? रोड्स एंड कोन्स करते हैं. जब वो रोड्स एंड कोन्स नहीं है तो कौन कन्वर्ट करेगा? कोई नहीं. न्यूरॉन का काम थोड़ी. न्यूरॉन आर ओनली वायर. न्यूरॉन्स आर व्हाट? वायर ना. न्यूरॉन्स आर वायर. जैसे घर में इलेक्ट्रिक सिग्नल जो अपने पूरे घर में जो वायर्स लगी हैं बल्ब के लिए, हर एक के लिए वायर लगी, तो वैसे अपनी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स विच वी कॉल देम. These are wire. These are connecting every single thing. Even if you are blinking your eyes, neurons are working. So brain is sending the signal through what? Through the neurons. Wires are there. So in this electrical current is flowing. है ना? अब देखो, यहाँ पर अगर कोई इमेज बनती है तो क्या वो ब्रेन तक इमेज बनती है तो क्या वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी? नो, No, sir. will not be converted. So if it will not be converted, will brain will receive the signal? No, sir. No, sir. If the brain will receive no signal, means यहाँ पर जो चीज बनी, यहाँ जो इमेज बनी, उसके लिए ब्रेन क्या हो गया? ब्लाइंड हो गया. यस और नो? ब्रेन क्या हो गया? ब्लाइंड. तो इस स्पॉट को अपन क्या स्पॉट, कौन से स्पॉट बोलते हैं? Blind spot. We call it blind spot. Sir, can you please repeat again? Okay. Your voice was cracking in mid. So see, देखो, what I'm saying, at this place, no roads, no cones, no rods, no cones. Where? Here. So will the conversion of image to electrical signal will happen here? No, No, sir. sir. No. When it will not happen here, brain will receive any signal? No, sir. No. So if brain will not receive any signal whose image is formed here, so means we are blind for this particular spot. Yes, sir. So this spot, what we name on after the same? Blind spot. What we name it? Blind spot. Is that clear? Yes, sir. But when we see an image, then how we are able to see the entire image?
See, you are not able to, but the thing is, you when you see when you we do not do it in our regular thing, but we can't see everything at a time in front of you. Can you? No, sir. No, sir. You can't see ना कहीं ना कुछ छूटता है. यस और नो? Yes, sir. कभी कोई चीज सामने होकर भी नहीं दिखती है. ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. क्यों? अब बताओ. It's a blind Because its spot. image is forming on. Blind spot. Blind spot. But if you turn your head or if you change the angle of the eyes, it will be visible. Yes or no? आंख को हल्का सा नीचे किया, दिखने लग जाएगी. क्यों? क्योंकि उसकी इमेज होती है. जनरली चीज अपन नोटिस करते ही नहीं. नेवर, नो ह्यूमन बीइंग्स मींस नोटिस इट बाय देमसेल्व्स विदाउट नोइंग. नोइंगली कर लो तो बात अलग है ना? सो यू कैन नॉट सी everything which is in front of you. Something somewhere, a small detail will be missing. Okay, why? Because its image is forming where its image is forming At the blind spot. at the blind spot, but we cannot notice it. Okay, there was an activity, I think in I forgot it, but there was a book we were using new approach. You guys were studying through new approach in class 8. Yes, sir. So in that one activity was there to locate a blind spot. I do not remember the exact activity, but it was there. Okay, so just leave it for now. Okay, but you can locate it somewhere it is. So that was the working of whole eye. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, now tell me, this ciliary muscle is clear? Yes, sir. What is Yes, sir. working of ciliary? What is working of ciliary muscle? It changes the focal length. It changes the focal length. Focal Okay, length. it accommodates the eye, right? Yes, sir. Then cornea. What is cornea? Protects the eye. A transparent It is a coating or transparent. layers. प्रोटेक्ट करने का काम तो eyelid का है ना? Cornea is just a transparent coating, है ना? What is work of iris? Controls the amount of light of It entering. Controls the amount of light which is entering in the eyes, and it is a colorful portion, right? Yes, sir. तो कलर से कोई मतलब नहीं है अपने को. And then pupil is here. Pupil is A hole present in the eye hole which present, collects hole the in the light. iris which allows the light to enter. Lens to converge the To light. convert the light. converts the light on retina. Sclera is white portion, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है. Retina, Sir, to इनकी भी convert कोई the जरूरत. image into electrical signals. हाँ, देखो ये कोरोइड और मैकुला ये कुछ नहीं है, ये शेप प्रोवाइड करते हैं आई को, है ना? अब विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व Transmit the electrical signals into the brain. ऑफ इमेज, है ना? एंड रेटिना कन्वर्ट्स द इमेज इनटू electrical signal. Now two things are left here. Sir, Hmm. I got that activity. What? Sir, that blind spot one activity I got. Got it, no? So show it to me. I will read it and I will explain that tomorrow. Okay? Yes. Because I was trying to understand it last 2 years by. Okay. So aqueous humor and vitreous humor. Two things are there. See, aqueous humor or vitreous humor, these are the transparent fluid. Okay, these are the fluid present inside the eye. So what will be their work? Tell me. Fluid का क्या काम होगा? To prevent the eye from getting dry. Dry, वो तो खैर ना. देखो ये क्या करते हैं ना, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड और एक्वस ह्यूमर, ये जब अंदर रहते हैं आंखों के अंदर तो ये आई को प्रॉपर शेप देते हैं. दिस, जैसे कि एक टायर है, टायर में हवा भर दो तो क्या होता है? फूल जाता है, प्रॉपर शेप में रहता है. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. है ना? और हवा निकाल दोगे तो
पंचर। कोई काम नहीं करता। तो वैसे ही ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का काम रहता है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, मतलब कि ये जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ये दीज डू नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट ऑन द इमेज फॉर्मेशन, ओके, बट दे प्रोवाइड दिस, यहाँ पर जो एक्वस ह्यूमर फिल होता है ये यहाँ पर प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, कॉन्वेक्स शेप प्रोवाइड करता है, किसको, कॉर्निया को। यहाँ पर जो अंदर विट्रस ह्यूमर इट इज प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर शेप टू आई। Is that clear? Is that clear? Please repeat. See, this aqueous humor is present between what? Aqueous humor is present between what? So cornea and lens. Cornea and lens, means iris like this. So when this aqueous humor is present, it is providing this convex shape to cornea. If you will take out the aqueous humor, what will happen? This cornea will become flat. Yes or no? Yes, sir. So aqueous humor is providing proper shape. Similar vitreous humor is also providing the proper shape. These are the transparent fluid present inside the eye. Now is it clear? Yes, sir. Okay, everything. Then we have power of accommodation. What is power of accommodation? So the ability of eye lens to change its focal length. Ability of eye lens to change its focal length. To change its focal length. Okay, depending on the things of which you are seeing. Then you have this far point. What is far point of human eye? Till where you can, which is the farther Infinity. distance till which you can see? Infinity. And near point? 25 centimeters. 25 centimeter. Okay, average. Then we have another thing that is called persistence of vision. See, everything which is happening or gonna happen or happened, everything takes some time. Yes or no? Yes, sir. Everything takes some time. So when the image will form on the retina, it will be there for quite some time. Yes or no? It will be there for quite some time, and then the next image will form. Yes? Yes, sir. Then the next image will form, then the next image. So what is persistence of vision? It is the time till which one single image retains inside the eye. Time till which a single image persists on retina. है ना? कितने टाइम तक एक इमेज रेटिना पर रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन? परसिस्टेंस ऑफ विजन। किसी को पता है ये कितना होता है? नहीं पता? ये होता है एक इमेज जो आंख पे रहती है, दैट इज 1/16 सेकेंड। तो एक साथ एक सेकेंड में कितनी इमेज बनेंगी? नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड? 16. हाँ, 1 सेकेंड में कितनी इमेज बनेंगी? 16 इमेज। यस और नो? यस और नो? है ना? अब देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो बनाने में। देखो, वीडियो में क्या होता है, बहुत सारी इमेजेस क्लिक होती हैं और एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी क्या होती है? प्ले होती है। कभी तुमने अपने मोबाइल में वीडियो सेटिंग ओपन की है? Yes. उसमें एक सेटिंग होती है FPS. How many of you have noticed? Anyone has noticed this setting FPS? इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है फ्रेम्स पर सेकेंड. Okay, what is called frames per second. So usually you are going to get in mobile 30 frames per second.
ओके, सो एक अपने को आंख में कितनी इमेज बनती है और एक बार में, एक सेकंड में कितनी इमेज बनती है? 16, 16। और अपने को देखने की और कैमरे में कितनी बन रही है? 30, 30। मतलब कि उस वीडियो को अपन स्लो करके भी देखेंगे तो अपने को कैसा दिखेगा? एज अ वीडियो ही दिखेगा, Yes, और नो, है ना? तो यही होता है। अब देखो जो पुराने वीडियो या कार्टून्स बनते थे उसमें क्या करते थे कि एक जैसे लाइक सपोज यू हैव टू मूव बॉल फ्रॉम हियर टू हियर और इसका एक वीडियो बनाना है, सो व्हाट दे वर डूइंग, first they take the picture of ball here, then they take the picture of ball here, then they take the next picture of ball little moved here, then they take the picture of ball that is moved here, then they take the picture of ball that is moved here. So likewise they were slightly shifting it and they were taking pictures, and how many pictures they were playing per second? At least 16. 16 pictures will be played per second. So in your eye on retina, how many images will form per second? 16 images only. Yes, sir. Okay, and the things will appear you like they are moving, right? yes sir, So this is how the initially it was done, but right now it is video cameras are there. You just open it and just start shooting it. In that also the same thing is happening. It is clicking video you are making means it is clicking too many photos per second. Okay, too many photos it is clicking per second. So this is how our human eye works. So this is was all about human eye work, and this was the working of normal human eye. Is it clear to everyone? yes, Okay. Yes. So we'll keep it till here. Tomorrow we are going to discuss about two things: myopia and hypermetropia. I think you guys already have studied this also before. yes sir, And a little Yes. bit knowledge if you have. Don't worry, if you don't have any knowledge, then also we will study that in detail, like we have studied human eye in detail. So tomorrow we will do both. And another is there, I think presbyopia is also there. So that is also we are going to discuss it, because everything we will see. Okay, so that we will do tomorrow, and then I think most of the things are there that we will finish. This chapter will be finished, but okay, there is no not too much numericals are there. 2-3 numericals are there, and the things will be over then. Okay. So is it clear to everyone? Any doubt in human eye? No, sir. No, sir. No one has any doubt? Okay.